anti-secretory drugs that will prevent the secretion of gastric acid in the stomach. First one is nothing but the histamine 2 receptor blocker. H2 receptor blocker. First drug is a cimetidine. So this will be discussed as a prototype. So histamine 2 receptor antagonist. It will block the histamine 2 receptor in the stomach and will prevent the formation of the acid. It is known as a selective histamine 2 blocker. Selectively blocks the histamine 2 receptor. H1 receptor को नहीं block करेगा. सिर्फ H2 receptor को ही block करेगा. Okay, this cimetidine was the first developed histamine 2 receptor blocker to reduce the acidity. So it will selectively bind to H2 receptor and H2 receptor of parietal cell and competitively block the H2 receptor. Remember. Now, what are the adverse effect? इसको adverse effect बहुत ज़्यादा है and that's why it is not used nowadays. It is no more used. Cimetidine is no more used. Common adverse effect like diarrhea, muscle pain, fatigue, bradycardia, and drowsiness. So drowsiness क्यों करता है ये? It can cross the blood-brain barrier. And that's why it causes drowsiness and confusion. So normal adverse effect जो है diarrhea, muscle pain, fatigue, bradycardia ये वो तो है. लेकिन it causes drowsiness and confusion due to crossing of blood-brain barrier. Long-term adverse effect. This cimetidine. Hepatotoxicity. So cimetidine prevent the binding of testosterone to its receptor. So it will prevent the binding of testosterone to androgen, and because of that it causes impotence in the males. जो males होते हैं इसमें ये क्या करेगा उसको sterile बना देगा. एक adverse effect है. Okay. Then another is there. Long-term use of this cimetidine again increases the prolactin level. Prolactin जो है उसका level बढ़ा देगा in both males and females. So that's why in the males, okay, in the males it causes gynecomastia. In the males it causes gynecomastia. In the males it causes gynecomastia, and in the female it causes galactorrhea. In the males it causes gynecomastia. क्यों? Because cimetidine increases the prolactin level. Prolactin का level बढ़ा देता है, and that's why in the male it causes gynecomastia. In the female it causes galactorrhea. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं मैंने लेकिन बोल रहा हूँ. And again it causes sexual dysfunction because it blocks the binding of testosterone to its receptor, and that's why it causes impotence in the male, sterility in the male, and it can cause sexual dysfunction. Then blood dyskaryosis, then anti-androgenic effect. So these are the adverse effect of your cimetidine. Remember the adverse effect, इसके ऊपर भी क्वेश्चन adverse effect के ऊपर क्वेश्चन आता है. ये adverse effect. Then again this cimetidine is a potent CYP enzyme inhibitor. जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा ये cimetidine. That's why metabolism interaction will be there. Other drugs. So if you use cimetidine concurrently with another drugs, so the metabolism of those drugs will be inhibited and their half-lives will be increased. What is use of this cimetidine? So it was the first drug developed as a histamine receptor. It was used in the duodenal ulcer, gastric ulcer, Zollinger-Ellison syndrome. Okay, cimetidine तो अभी यूज नहीं करते. उसके बाकी जो ड्रग है रेंटिडीन, पैमोटिडीन, निजाटिडीन, ओके, रेंटिडीन, रेनिटिडीन, ठीक है, रेनिटिन, पैमोटिडीन, निजाटिडीन एंड निजाटिडीन, पैमोटिडीन, ये जो ड्रग है वो यूज करते हैं आजकल. पैमोटिडीन, निजाटिडीन, रेनिटिडीन ये यूज करते हैं. They are used for duodenal and gastric ulcer. Then they are also used in the Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome is because of the excessive gastrin level in the blood. क्या होता है कि excessive gastrin level blood में वो होने के कारण हाइपर एसिडिटी होता है, उसको बोलते हैं Zollinger-Ellison syndrome. ये किसी ने नहीं बोला होगा. Then it is also used in the gastroesophageal reflux disease GERD. Gastroesophageal reflux disease GERD. Then also used in the treatment of gastritis and in the NSAID induced ulcer. So these are known as H2 receptor blockers. So remember cimetidine को adverse effect है, बाकी ड्रग को यूज करते हैं उसमें famotidine जो है that is the most potent H2 receptor blocker. Famotidine is the most potent H2 receptor blocker. Next is nothing but the okay ranitidine. Next drug is the ranitidine from H2 receptor blocker. So it is a nitroethane derivative from nitroethane derivative of furan. यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री भी दिया है. नाइट्रोइथेन डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरन. तो फ्यूरन थिंग है इसमें ranitidine. So action is similar to cimetidine but not inhibit the hepatic metabolism, and it has a least effect on androgenic
That's why it will not cause gynecomastia, sexual dysfunction. It will not cause galactorrhea in the females. And also devoid of any central limit. Drowsiness भी नहीं करेगा. Common adverse event क्या है इसके? Nausea, vomiting, diarrhea. Nausea, vomiting, diarrhea. It has a less adverse effect than cimetidine, but 10 times more potent than cimetidine. So ranitidine is used. Cimetidine is not used. It is a what is uses? What are the uses? Same like above means Zollinger-Ellison syndrome, duodenal ulcer, gastric ulcer, then GERD. These are the uses. Okay. Nizatidine is 100% bioavailability. Another derivative is known as nizatidine. तो उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या है 100%. तो इसके बारे में एक आई थिंक रिसेंटली मुझे किसी ने तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था. So which drug has a 100% bioavailability? So nizatidine. Nizatidine is having 100% bioavailability. Then roxetidine is also similar, having similar properties to the ranitidine. Next drug is a famotidine. Famotidine is a thiazole derivative. Remember, ये thiazole derivative है. तो ranitidine में क्या है कि furan derivative है and famotidine क्या है thiazole derivative. So it is a again H2 receptor antagonist 30 times more potent than cimetidine. So it is the most potent H2 receptor blocker. याद रखो. इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? हेडेक, डिजीनेस, जीआईटी सिम्टम्स मतलब वही nausea, vomiting, diarrhea. Uses क्या है? Same as the ranitidine and famotidine. Okay, ranitidine and cimetidine. It is the most potent H2 receptor blocker amongst the family. आप ये लाइन याद रखो. Now omeprazole. Now next is the proton pump inhibitors. Next class is the proton pump inhibitors. So in that case first drug is omeprazole. It is a substituted benzamide derivative. याद रखो substituted benzimidazole derivative. क्या ये benzimidazole derivative? Benzimidazole derivative. They inhibit the final step. They inhibit the final step of acid formation in the stomach. जो proton pump होता है जो that will make available hydrogen. So that step is inhibited by these proton pump inhibitors or omeprazole, rabeprazole, dextromethorphan, esomeprazole, okay, pantoprazole. So all azoles, pantoprazole, omeprazole, esomeprazole, dextromethorphan, all these are known as the proton pump inhibitors and they inhibit the final step in the acid formation in the stomach and they irreversibly inhibit the sodium potassium ATPase pump. क्या करेंगे वो irreversibly inhibit करेंगे किसको? पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीज पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट द पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीज पंप. ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चरल मॉइटी है उसमें दो स्ट्रक्चरल मॉइटी होता है बेंजीमिडाजोल प्लस सल्फेमाइड एंड दे आर द प्रोड्रग्स. ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो प्रोड्रग होते हैं. So after metabolism they are broken down and sulfamoid moiety is released and that moiety inhibit the proton pump irreversibly. ये याद रखो. लिखा नहीं है लेकिन याद रखो यहाँ पे बोला. Now what are the adverse effect of this? Adverse effect क्या रहेंगे इस क्लास के? GIT disturbances, then dizziness, drowsiness, okay? Dizziness. Main side effect is hyperglycemia. Hyperglycemia मतलब क्या? ये गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ा देगी बॉडी में. हाइपरगैस्ट्रिनीमिया मतलब गैस्ट्रिन जो हार्मोन है आपका उसका लेवल ये बढ़ा देगा. देन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज यू कैन डेवलप एक्लोराइड्रिया मतलब क्या? absence of gastric acid in the stomach. Achlorhydria मतलब absence of achlorhydria. So hypergastrinemia is the adverse effect. Hyperachlorhydria is the adverse effect. Now they are used in the gastric ulcer, duodenal ulcer, Zollinger-Ellison syndrome, then stress-induced ulcer, aspiration pneumonia मतलब क्या कि आपका aspiration pneumonia मतलब आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वहां से स्टमक में से जो खाना खाया वो ऊपर आता है आपके और आपका ट्रकिया में इंटर करता है. ट्रकिया तो उसको बोलते हैं एस्पायरेशन निमोनिया और उसके बाद में वो निमोनिया हो जाता है. सो lansoprazole in this category, lansoprazole, pantoprazole, esomeprazole, rabeprazole, they are the another drug from same category. So pantoprazole and rabeprazole they are available for intravenous use. Pantoprazole जो है और rabeprazole जो है उनका intravenous formulation भी available है. Pantoprazole is the more stable than another PPA. Pantoprazole जो होता है वो more stable होता है other PPA से. यहाँ पे और एक बात याद रखो. They will inhibit the gastric acid formation for 24 hours. Okay?
they will need the gastric acid formation for 24 to 48 hours. इनके लिए gastric acid formation नहीं होनी है. And remember one more thing, they are given in the early morning. They are given in the early morning in the form of entry coated tablet. क्या होता है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो अगर आपने दिए एम्प्टी स्टमक में देंगे तो उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है गैस्ट्रिक एसिड में, बिकॉज दिस ओमेप्राजोल और दिस पीपीआई दे आर अ वीक बेसिक ड्रग. तो ये बेसिक ड्रग होने के कारण क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड में इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. सो दे आर द वीक basic drug and they are discharged in the gastric acid, and that's why they are given in the form of entry coated tablet or entry coated capsule. Okay, and they are given in the early morning on empty stomach. Okay, and they will inhibit the gastric acid formation for at least 24 to 48 hours. Remember this. Now next we'll see anti-muscarinic drugs which are used as an anti-ulcer drug. Anti-muscarinic drug which are used as an anti-secretory agent. So they will block the muscarinic receptor M1 in the stomach and prevent the acid formation. Okay, and due to anti-muscarinic effect, they will have adverse effect like they will prolong the gastric acid time. They will prolong the gastric acid time. Okay, and they other anti-muscarinic side effect like for example dryness of mouth, urinary urinary urgency, etc., etc. Difficulty in urination and all that. Contraindicated in presence of concurrent reflex esophagitis. अगर esophagus का inflammation हो गया या infection हो गया, so in that case these drugs are contraindicated because these drugs are not recommended in case of recommended for the these drugs are not recommended for the duodenal ulcer, not used due to adverse effect. ये उनका ज़्यादा यूज नहीं है due to adverse effect. कि muscarinic के adverse effect है तो इसलिए. Now next one is a bismuth salt. Bismuth salt. Okay, so they are not absorbed. Okay, they will white precipitate. Okay, in the gastric acid. They will whenever they will go in the acid bismuth salt. Okay, bismuth salt जैसे acid में जाता है उसको neutralize नहीं करेगा. So they will not neutralize the acid, but bismuth salt whenever come in contact with the acid they will get polymerized and they will form a coating करेंगे किसके ऊपर जो अल्सर हो चुका है उसको. So they are not absorbed. White precipitate are formed in the gastric acid and which coat the ulcer crater मतलब अल्सर का जो गड्ढा हो चुका है वहाँ जख्म हो चुका है उसके ऊपर कोटिंग करेंगे with the bismuth glycoprotein complex which has a great barrier with the gastric acid and also toxic to the Helicobacter pylori. तो ये क्या करेंगे, ये जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और वहाँ पे कोट फॉर्म करेंगे जो अल्सर ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर एक कोट फॉर्म करेंगे एंड इट विल फॉर्म ए बैरियर एंड विल प्रिवेंट द फर्दर इंक्रीज इन द अल्सर. जो अल्सर बना है उसको ज्यादा बड़ा होने नहीं देंगे बिकॉज दे विल फॉर्म ए कोट ऑन दिस अल्सर. And also this bismuth salt is also toxic to the H. pylori infection. What is the adverse effect of bismuth salt? So bismuth salt is known as a ulcer protective. ठीक है, अभी हो गया आपका एंटासिड हो गया, आपका हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर का प्लस हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, एंटी मस्कर्निक हो गया. अभी क्या है अल्सर प्रोटेक्टिव. अल्सर प्रोटेक्टिव मतलब bismuth salt they will go in the acid, they will precipitate it and will form a coat on the ulcer and prevent the further decomposition of that ulcer. Adverse effect क्या है उसके? Constipation. Okay, constipation, blackening of stool. आप मॉर्निंग में टॉयलेट में जाओगे तो आपका पूरा ब्लैक स्टूल हो जाए. It causes neurotoxicity. Then it is used in the peptic ulcer for the protection of peptic ulcer. तो ulcer protective है. याद रखो इसको anti H pylori effect भी है. Now next one is a sucralfate. Sucralfate is also again ulcer protective. It is a sulfated sucrose and aluminum hydroxide complex. Sulfated sucrose and aluminum hydroxide complex. It forms a gel in presence of acid, which will form a coat on the ulcer crater and for more than 6 hours. तो ये भी क्या करेगा, जैसे ही एसिडिक कांटेक्ट में आता है ये सुक्रोल्फेट तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा. So it get polymerized whenever it will contact in the acid environment and it will also form a coat on the ulcer crater for more than 6 hours and prevent the further damage to the ulcer from acid. Okay, and protect the ulcer. They form a physical barrier and act as a mucosal. They form a physical barrier and acts as a mucosal defense. Also has a weak acid neutralizing capacity. तो ये एंटासिड नहीं है. तो कोई बोलेगा बिस्मथ सॉल्ट क्या है, तो एंटासिड नहीं है, ये क्या है
अल्सर प्रोटेक्टिव है, ठीक है। सो एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, सो इट इज यूज्ड एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव। नाउ नेक्स्ट वन इज अ prostaglandin analogs like misoprostol, n-prostil, carbapostil, then riprostil. They will prevent the excessive formation of acid or formation of acid by secreting the bicarbonate ion and mucus. So prostaglandin E, prostaglandin G1 reduces the gastric acidification and lower the concentration of acid and promote the cytoprotection by secreting the mucus and by secreting the bicarbonate ion. यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ. So all these are the analogs. Analog means synthetic derivative. Now they are also used. They have dose related adverse effect, dose related cytotoxic effect. अभी ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये यूट्राइन जो है, प्रेग्नेंट यूट्रस जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. So they have dose related oxytocin effect. They also cause diarrhea and they are contraindicated in the pregnant woman because ये को pregnant woman में देंगे तो उसका वही डिलीवरी करा देगा ये prostaglandin. So useful in the elderly patient. Useful in the elderly patient for the ulcer treatment. Now treatment of choice for H. pylori eradication. अगर H. pylori का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे? It is known as triple therapy or quadruple therapy. So treatment of H. pylori where there is a ये थेरेपी देना है, known as a standard triple therapy. आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज करना है, अमोक्सिसिलिन यूज करना है, लेंसोप्राजोल यूज करना है. क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम और मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम. अगर पेनिसिलिन का एलर्जी है तो मेट्रोनिडाजोल यूज करो. लेंसोप्राजोल 30 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 14 डेज, नोन एज अ ट्रिपल थेरेपी. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2021 में. ट्रिपल थेरेपी फॉर एच पाइलोरी रेडिकेशन इंक्लूड्स, और वो ऑप्शन में था क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, लेंसोप्राजोल, और दूसरा एक ऑप्शन था एक्सेप्ट था, ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन आंसर था. स्टैंडर्ड क्वाड्रपल थेरेपी, क्वाड्रपल मतलब 4 ड्रग, ट्रिपल थेरेपी मतलब 3 ड्रग. क्वाड्रपल में आता है लेंसोप्राजोल, बिस्मथ सब साइट्रेट, टेट्रासाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल फॉर 14 डेज. ये भी ट्वाइस अ डे फॉर 14 डेज. सो इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर एच पाइलोरी. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखो. ट्रिपल थेरेपी में क्लेरिथ्रोमाइसिन रहेगा, अमोक्सिसिलिन रहेगा या फिर मेट्रोनिडाजोल, अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड लेंसोप्राजोल. तो अमोक्सिसिलिन को अगर नहीं दे सकते, अमोक्सिसिलिन एलर्जी है पेनिसिलिन का, तो मेट्रो यूज करो, ठीक है. क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, amoxicillin 1000 मिलीग्राम और मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम एंड लेंसोप्राजोल 30 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे फॉर 14 डेज, नोन एज अ ट्रिपल थेरेपी. इसमें वो मर जाएगा वो बैक्टीरिया. अगर ये नहीं कर सकते, एरिया विद हाई क्लेरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस. इसको क्लेरिथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज नहीं करना. जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस कम है उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज करना. Therefore, this quadruple regimen will not have clarithromycin. So यहाँ पे क्या है, lansoprazole है, उसके बाद में क्या है, और बिस्मथ सबसाइट्रेट. यहाँ पे एंटीबायोटिक कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन. तो क्लेरिथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस अगर नहीं है या फिर कम है तो उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड लेंसोप्राजोल ट्रिपल थेरेपी यूज करो. जिसको क्लेरिथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस है तो उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन को रिप्लेस करके टेट्रासाइक्लिन ऐड करो एंड बिस्मथ सबसाइट्रेट ऐड करो. So this was the regarding today's session and some other points are also there. ये एक थोड़ा सा याद रखो. Dimethicone is a water soluble repellent pharmacological inert anti-foaming agent used to reduce the flatulence and can be used to prevent the bed sore. Dimethicone नाम का एक ड्रग होता है, Dimethicone. ये वाटर insoluble होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, pharmacologically inert होता है. So whatever flatulence that is caused by antacids that can be relieved by Dimethicone. Also used in the prevention of bed sores. Then again remember milk alkali syndrome. Milk alkali syndrome. Milk alkali syndrome. Milk alkali syndrome is a adverse effect of your antacids. जो antacids होते हैं, जो calcium containing antacids होते हैं, calcium and magnesium containing. So mostly calcium and magnesium containing antacids, they will have one more adverse effect known as the milk alkali syndrome. So it is associated with the use of sodium bicarbonate and calcium carbonate containing food and milk. So there is abnormal increase in the calcium and calcium level in the body known as a milk alkali syndrome. Amino hydroxide gel क्या करता है, constipation करता है, and magnesium triazolate क्या करेगा,
diarrhea करेंगे. Proton pump inhibitors are the prodrug. Their active moiety is a sulfamide. मैंने बोला है आपको sulfamide. So they are the prodrug. यहाँ पे याद रखो proton pump inhibitors क्या है? Prodrugs होते हैं. Prodrugs. Okay. After metabolism they are converted into active metabolite known as a this sulfenamide. That is the active moiety which will inhibit the irreversibly proton pump. Remember, proton pump inhibitors (PPIs) are the drug of choice in case of peptic ulcer due to etiology of NSAID induced. मतलब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि drug of choice in the NSAID induced ulcers. So proton pump inhibitors. They are also drug of choice in the gastrointestinal reflexive disorder. PPIs are drug of choice in the NSAID induced ulcers. They are drug of choice in the GERDs, gastrointestinal reflex disorders. Zollinger-Ellison syndrome. इसके बारे में बोला है मैंने. There is an abnormal increase in the gastrin level and because of that hyperacidity. Zollinger-Ellison syndrome. Drug of choice in the gastric. They are drug of choice in the NSAID induced ulcer, drug of choice in the steroidal induced ulcer, drug of choice in the GERDs, drug of choice in the Zollinger-Ellison syndrome. Proton pump inhibitor like omeprazole, aripiprazole, esomeprazole, dexlansoprazole, pantoprazole, etc. Long-term use of proton pump inhibitor is associated with the reduced absorption of vitamin B12 and reduced absorption of calcium. तो प्रोटॉन पंप अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे उसमें क्या होगा, विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा. टू डिक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हिप फ्रैक्चर. इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है. Now lansoprazole is the most potent proton pump inhibitor amongst the family and it is also safe in the pregnancy. ये क्या होता है? Esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, they are available as a IV preparation. इनका इंजेक्शन अवेलेबल है. ड्रग है ये rebapamide and icabate. These are the new drugs. Rebapamide, icabate, they are the cytoprotective drug. मतलब ये सेल को प्रोटेक्ट करेंगे, सेल को प्रोटेक्ट करेंगे. Cytoprotective drug, cell damage नहीं होंगे. Acting by increasing the prostaglandin generation, also scavenging the reactive oxygen. तो फ्री रेडिकल जो है उसको भी scavenge कर देंगे. Triple therapy for H. pylori infection, that is nothing but the CAP, CAP. CAP मतलब clarithromycin, C for clarithromycin, A for amoxicillin and P for proton pump inhibitor. So that is known as a triple therapy. याद रखो ये triple therapy. Erythromycin, amoxicillin and proton pump inhibitor. So this was regarding today's session.